Hello everyone, good evening. कैसे सब लोग? How are you all doing? Hello guys. Hello Aman. Hi वैभव, रितेश नहीं, कैट का सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, अब तक तो नहीं हुआ है, आगे जाके भी नहीं होगा. वैभव, आई एम डूइंग ग्रेट बडी, थैंक यू सो मच. हाय सपना, हेलो जीन, मेरे पिताजी गुड इवनिंग. हेलो सुप्रिया, हेलो वेदांत, पूजा, रवि, शुभांगी, सिमरन, अक्षय, रोशनी, मानसी, वेलकम वेलकम. हेलो सुदीप, सोहेल, चंदन, डॉली, खुशबू, हेलो दिव्या, वेदांत. अच्छा, बहुत सारे लोग हैं. सिमरन, विशाल, हेलो हाय. फील्स गुड टू सी योर मैसेज विशाल. हाय रिंसी, हेलो हीमा, हाय विभोर, सोहेल, शुभम. Alright, Anjul, Shubham, Vani, Kavya, welcome guys, welcome. I am extremely sorry for the delay. I'm so happy to see that you guys are so eager to learn. Yeah, this, ladies and gentlemen, is our second lecture on number system where we will be focusing purely on prime numbers. Yeah, now you'd be wondering कि sir prime numbers में इतना क्या है, इस पे क्यों इतना ध्यान दिया जाता है? Yes, the importance of prime numbers goes way beyond your normal mathematics or your normal CAD ka calculation. Okay, but we will not get in that depth. We will talk about just the things that we require. Yes, we will not talk about anything that our CAD does not test. Okay. My name, ladies and gentlemen, is Amit Surana. I am an aeronautical engineer from Chennai. I have 6 years of experience teaching quantitative aptitude across different platforms to different kind of people throughout the country, and I've trained over 2 lakh people in my tenure so far. Please go ahead and follow hashtag cat live daily on Instagram so that you keep getting updates every now and then. And if you are planning on sharing this on your social media platforms, then please do not forget to use this hashtag as well. So today what we are going to look at, guys, are what are prime numbers, what are composite numbers, and most importantly, the actual worth of your money today. Achena, paying what time is money. Yeah. So the actual worth of your time here is rules of prime numbers. Yes. A lot of us have a lot of confusions about them, so we will talk about them. We will also have a very healthy conversation like we had yesterday. Yeah. Yes, and if you're looking for a place where you would get all the updates on our classes, अपने जो regular classes होते हैं वो regular के अलावा भी बहुत सारे classes होते हैं guys, and tomorrow you are up for a surprise. कल आप ये वाला channel, please tune into this channel. You will be surprised to see what you see tomorrow. Okay, don't worry, I'll not keep the suspense up for long. I will let you know what we will do tomorrow. But if you're looking for updates on any of these, then please go ahead and get yourself added to our group on Telegram. अपना group नहीं, अपना community है. We have a a community on Telegram, so you can join that. If you're looking for notes, if you're looking for a specific class, so YouTube पे थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना, then you can definitely go ahead and search on that group, and you will have the link to it, and it will be useful. Okay guys, so if anyone is planning on joining plus, क्योंकि अगर आप अपना CAT preparation seriously लेना चाहते हैं, if you want to take your CAT preparation in such a way that you don't do it for the sake of doing, but then do it because you want to do it, है ना? So please consider this. The benefits here are way beyond our 2-minute 3-minute conversation. तो ये बहुत सारा there's too much to talk about here, but in short, if you are someone who would be giving CAT in the year 2020, अगर हुआ तो नहीं होगा जरूर होगा, don't worry, then you would be taking up the 12-month one, and if you're looking for something in the year 2021, then you would be taking this one up. This plus, if you use my referral code, you will get an additional 10% discount. That means the 12-month one will cost you somewhere around 15,000, and the 24-month one will cost you somewhere around 18,000.
yes, which is actually very, very less, it's not very expensive compared to other players in the market. Yes. Okay guys, so here is the surprise. So anyone who has been wondering ke sir सॉरी एक्साइटमेंट में जो है एक्साइटमेंट गले में उतर गई. Okay, so if anyone has been wondering कि सर I don't get time to watch your videos on the weekdays, तो weekends पे कुछ करना चाहिए सर. Weekend, people who are working, people who are studying, people who can't give enough time to this on a regular basis, ये especially आपके लिए है and anyone else also. So this is a quick revision on everything that we have covered so far. Not just a revision, this is also something that will have something new, है ना. So this is not just a collated part of everything that we have done so far, but the concepts that we'll be covering would be the ones that we've covered so far. So we are starting 7 a.m. in the morning. कल सुबह, कल फ्राइडे है, 7 a.m. in the morning to 9 a.m. प्रतीक सर लेंगे quantitative aptitude. Then Ashish sir will come and talk about LR and DI from 9 to 11 a.m. Then Harpreet ma'am will come from 11 a.m. and go all the way till 1 p.m. Yes, 2 hours of verbal and RC. And after that, I would, end this marathon. We plan to call this as a CAT marathon, जहाँ पे 7 a.m. to 3 p.m. लगातार back to back we would be learning everything that is there to learn about CAT. Yes. So I'm hoping to see all of you, and not just all of you, I would want all of you all to bring people along with it, right? +1, +2, +3 लाइए इसमें. Are you understanding? So morning 7 a.m. till 3 p.m. लगातार classes होंगी, और उसके बाद भी आपके लिए बहुत सारे surprises है, right? Tomorrow you would have mock test. Tomorrow you would have Menti quiz. Tomorrow you would have a good interview with your educators. Yes, a lot of small sessions. बहुत सारा plan करके रखा है हमने कल के लिए, right? So I am hoping that all of you would make sure that you make time for this. Yes, 7 a.m. to 3 p.m. के बाद भी बहुत कुछ plan करके रखा है, तो make yourselves free tomorrow, make yourselves available tomorrow, because I and everyone, all these 4 names here, would be expecting you tomorrow. Yes. All right. Ankush, Bobby ma'am will be there, but she'll not be taking a marathon session. Yes. Instead, Harpreet ma'am would be taking the verbal session. Okay. And Ankush, I would definitely tell Bobby ma'am कि आपने उनके बारे में पूछा था. Yeah. Right, Ritesh, नहीं कुछ change नहीं हुआ है Ritesh. There has nothing that has changed in CAT. Yes, syllabus तो कतई change नहीं होने वाला है. Syllabus तो कतई change नहीं होने वाला है, and maybe the writing pattern of CAT might change, but that is वो बाद में देखा जाएगा. Right, उसकी अपन को टेंशन नहीं है. Syllabus की टेंशन थी, वो तो मैंने दूर कर दी. Right. शुभम, अगर 9 बजे उठ रहे हो तो 9 बजे उठते ही आशीष सर के क्लास में आ जाना, और एक काम करना, कल जो है 2 घंटे पहले उठ जाना और रात में 2 घंटे जल्दी सो जाना. और क्या, इसके अगले दिन तो सैटरडे है, चिली मारना है सैटरडे को, है ना. चलिए ठीक है गाइस, सो दिस वाज अ क्विक अपडेट ऑन व्हाट आर वी डूइंग. शुभम, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस फ्रॉम माय एंड वी विल स्टार्ट आफ्टर नंबर सिस्टम. नंबर सिस्टम खत्म होते ही we will jump on to modern mathematics and we will deal with permutation combination, we will deal with probability, we will deal with sequence and series also, progressions and all that. Yes, we will also look at a few things from set theory. Yes, so feel free, all of that would be after number system, definitely after number system. Yes, so a quick recap on what we have seen yesterday, at least with respect to क्या क्या पूछा जाता है, कितना पूछा जाता है. So we know number systems does not have that much of an importance, but since this is something that is very much understandable and most of the questions are doable, difficult आते हैं इसमें भी questions, but those questions are at least doable, है ना. So you would get, how many did I say yesterday, how many questions from number systems would you get? Yes, somewhere close to 3 to 5 questions from number systems, है ना. तो 3 से 5 question मतलब क्या हो गया, आपके 10 से 15 मार्क जो है इस पे डिपेंड करते हैं. Yes, and this is an easy grab. Number systems बहुत ज्यादा है पढ़ने को, but then is an easy grab. Yes,
and these are the concepts that are tested, and high frequency वाले, low medium frequency वाले and low frequency वाले. ठीक है, चलिए फिर मेरे पिताजी ने बोल दिया है, अक्षय ने बोल दिया है, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड स्टार्ट. नहीं अंकुश, वो सिर्फ कल के लिए है, कल के लिए है अंकुश. जैसे वानी है, वानी हैज नॉट बीन अटेंडिंग लाइव सेशंस वेरी फ्रीक्वेंटली, तो उनके लिए है ये क्विक रिवीजन. अब तक का जितना भी देखा था अंटिल नाउ वाला एपिसोड है. ठीक है, चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट प्राइम नंबर्स. लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ प्राइम नंबर्स टू बिगिन विद. डेफिनेशन क्या है प्राइम नंबर्स का? A number that is divisible by 1 and itself. है ना? Hello Badal. Hi Badal, welcome. Yeah, so what do we know about number systems? Sorry, what do we know about prime numbers? Prime numbers क्या है? Anything that is divisible by 1 and itself. But then वो जो definition है, that definition has some restrictions to it, right? That applies only for natural numbers that are more than 1. Yes. बट अगर 1 को भी कंसिडर करना है, या अगर आपको एक जनरलाइज्ड फॉर्म चाहिए ऑफ प्राइम नंबर्स, देन इफ वी कैन अस्यूम दैट द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर इज f, तो प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होने चाहिए? एग्जैक्टली 2. यस, प्राइम नंबर्स के एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने चाहिए, नॉट मोर नॉट लेस. एंड व्हाट शुड दोस 2 नंबर्स बी? इट इज वेरी क्लियर. 2 नंबर क्या हो सकता है? कोई भी आप नंबर ले लो. अगर मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं, 17 ले लेता हूं, 17 पे खतरा अगर मैं ले लेता हूं, आई कैन राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स. हाउ कैन आई राइट 17 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स? एनीवन? 17 को मैं नेचुरल नंबर्स n1 into n2 कैसे लिखूंगा? The only way I can do that is write it as what? 17 into 1, है ना? Yes. So then 17 becomes what? A prime number. If the number of factors are 2, exactly 2, then it would be a prime number. Cool? Yes. Now this particular information, this particular piece of information is essential not only for your definition के लिए. Definition में तो समझ में आएगा ही आएगा, but this could be very useful for some tricky questions also. Yes, and we'll talk about them in the towards the end of the class. Okay. Very good, superb. तो कभी भी ना गाइस, कभी भी कोई भी अगर पूछे तो डोंट से 1 एंड इटसेल्फ, क्योंकि वो बहुत बचकाना लगता है, और फिर उसका अगला क्वेश्चन यही होगा तो फिर 1 का क्या? क्योंकि आई कैन राइट 1 एज 1 into 1, है ना? आई डिड नॉट से दैट द 2 नंबर्स हैव टू बी डिस्टिंक्ट. तो आई कैन राइट 1 into 1. आई कैन से 1 is divisible by itself and it is divisible by 1 also, है ना? Yes, there is a contradiction there. There is definitely a क्या बोलते हैं paradox here, but still, yes, I can say that. So 1 cannot be a prime number only because the number of factors for 1 is not equal to 2. That's it. Yes, इतने में अपना खत्म हो गया. Yes, that is the definition of prime numbers. अब सिर्फ definition का क्या करें? हाँ सर, -17 होगा प्राइम नंबर? डेफिनेटली नॉट अक्षय, डेफिनेटली नॉट. -17 पहली बात नेचुरल नंबर नहीं है. -17 is not natural. Prime can only be, prime is a subset of natural numbers. ये याद में रखना गाइस. Prime is a subset of natural numbers. इसके अंदर आता है prime. समझ में आ रहा है आपको? Yes. And what is known, -17 का इसका मैं लॉजिक भी बता देता हूँ. ये 1 से डिविजिबल है, ये 17 से डिविजिबल है, ये -1 से डिविजिबल है, और ये -17 से भी डिविजिबल. तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स इज नॉट इक्वल टू 2. समझ गए? Yes. मानसी, I am not denying that 1 is neither prime nor natural. वही तो मैं बोल रहा हूं, 1 is not prime. Yes, 1 is not prime. मैंने कब बोला कि 1 प्राइम है? मैं नहीं बोल रहा 1 प्राइम. अगर मैं कभी बोल दूं गलती से भी कि 1 प्राइम है तो मेरे को पकड़ के एक दो सुना देना, ठीक है? 1 is not prime. Never ever is prime. ठीक है? स्पर्श क्या समझ में नहीं आ रहा है? हाँ करेक्ट, मेरे पिताजी एकदम सही बोल रहे हैं. मेरे पिताजी हमेशा सही बोलते हैं, आज तो बहुत ही ज्यादा सही बोल रहे हैं. यस, गॉट इट. द नंबर ऑफ फैक्टर्स हैज टू बी एग्जैक्टली 2, नॉट मोर नॉट लेस. दैट्स इट, दैट्स द डेफिनेशन. यस, जब 2 होगा फैक्टर्स तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट हैज टू बी 1 एंड इट हैज टू बी द नंबर, द प्राइम नंबर इटसेल्फ. क्लियर? चलिए, ये अगर आपको समझ में आ गया गाइस तो इमीडिएटली गो अहेड, हिट लाइक, एंड लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जहां पे हम बात करेंगे व्हाट आर प्राइम नंबर्स. तो पहले सब 2 के फैक्टर्स देख लो, सब 2 के मल्टीपल्स देख लो, वो निकल गए.
यस, फिर सब 3 के मल्टीपल्स देख लो, वो निकल गए, है ना। देन सब 5 के मल्टीपल्स देख लो, वो निकल गए, सब 7 के मल्टीपल्स देख लो, वो निकल गए। उसके बाद जो भी बाकी है एवरीथिंग इज प्राइम नंबर। यस, 2, 3, 5 और 7 के मल्टीपल्स को निकालने के बाद जो भी बाकी है आर प्राइम नंबर्स, बट टिल वेयर, टिल 100। गॉट इट, टिल 100। So this was introduced by a Greek mathematician, yes, who was also someone who figured out the circumference of the earth. Yes, उसका नाम बहुत ही मुश्किल है, तो मैं उनका नाम लेके I don't want to insult their name here. Yes, it is somewhere in the sounds of esophagus. नहीं, बट वो तो यहाँ का है, esophagus नहीं है guys, बट कुछ तो है जरूर है। Yes, okay, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, if the prime for prime numbers less than 100, yes, for prime numbers less than 100, how you can check? Any number that is not a multiple of 2, 3, 5 and 7, yes, 2, 3, 5 and 7 अगर नहीं है, multiples of 2, 3, 5, 7 नहीं है, तो they have to be what? Prime numbers. Yes, that applies for 1 till 100. 1 तो है ही नहीं सिस्टम में, 1 तो है ही नहीं सिस्टम में, बट उनके अलावा। Got it? So this would be a very nice way for us to figure out if a number is prime or not if it's less than 100. Got it? अक्षय शर्मा, अक्षय 1/2 कैसे इवन होगा, कैसे प्राइम होगा? अगेन इवन और ऑड में क्या है? इवन और ऑड इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्यों भूल जाते हैं हम बार बार? नेचुरल नंबर्स में ही होते हैं इवन, ऑड, यस, इवन, ऑड, प्राइम, सब जो है इन्हीं में होते हैं। आर यू गेटिंग इट? आर ऑल अ पार्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो फ्रैक्शंस वुड नॉट फॉल अंडर नेचुरल नंबर्स, मतलब वो इवन और ऑड के झांसे में आते ही नहीं है। गॉट इट? यस। इराटोस्थेनीस, अगर मैं बराबर बोल रहा हूं, नहीं तो फिर उनकी आत्मा जो है मेरे को हमेशा हमेशा के लिए तड़पाएगी, इसलिए मैं रिस्क ही नहीं लेना चाहता। ठीक है, यस, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये रहा। सो हियर्स द लिस्ट ऑफ फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स दैट आर लेस देन 100। तो 101 से हटा दो तो फिर दिस वुड बी इट। यस, दिस इज जस्ट फॉर अस टू फिगर आउट। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे रूल्स हैं इनके, apart from the fact that they should not be a multiple of 2, 3, 4, 2, 3, 5 and 7, yes, for the first 100. Apart from that also there are a lot of rules, but इसका क्या है याद रखो, for a prime number that is less than 100, मैंने शायद ऊपर पिछले वाले स्लाइड में more than 100 लिख लिया था, है कि नहीं? हाँ, वही तो, less than 100, ठीक है, less than 100. For any prime number less than 100, it should not be a multiple of 2, 3, 5 and 7. Yes. Got it? Not a multiple of these numbers. तो ये इजी रहेगा हम लोगों को हेल्प करने में, टू आइडेंटिफाई सेट नंबर्स आर प्राइम और नो। या नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉम्पोजिट नंबर्स। नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम आर कॉम्पोजिट, ये भी गलत है। नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम आर कॉम्पोजिट, ये भी गलत है। क्यों? ये क्यों गलत है? क्योंकि इसमें दोबारा से कौन आता है? बाधा डालने वाला आता है नंबर 1। यस, 1 is not prime. Does it mean it is composite? 1 is not prime. Does it mean it is composite? No. It is neither prime nor composite. क्यों? क्योंकि composite के लिए क्या होना पड़ेगा? Number of factors को greater than 2 definitely होना पड़ेगा, right? The number of factors has to be greater than 2. A number should have more than 2 factors for it to be called composite. Yes, that is why 1 is neither prime nor composite. Yes, it is not prime, not composite. Cool. Words are not visible, Jyoti. The ones that I am writing, they are not visible, is it? Shiv, except for 2, 3, 5, 7, yaar. Except for 2, 3, 5, 7.
अरे ऐसे मेरे को अगर बातों में फंसाओगे तो कैसे चलेगा? यस डॉली, HCF is equal to 1 for what? For what? HCF LCM का भी कंफ्यूज मत करो. What you are talking about is something else. HCF can only be there, common जो वर्ड है can only come if there are more than one numbers. समझ में आ रहा है आपको? मोर देन वन नंबर्स होगा तभी होगा. तो वो को प्राइम्स है, उसके बारे में हम बाद में बात करें. दिस इज कॉम्पोजिट्स. ठीक है, क्लियर? Now let's talk about the properties of prime numbers, right? Let's talk about the properties of prime numbers. Yes, first things first, the only even prime number, the only even prime number is what? What is the only even prime number? Anyone? कौन बोलेगा? The only even prime number ever is 2. Yes, the only even prime number is 2. The smallest prime number is also 2. Yes, only even prime number. ये सिर्फ only है, only. इसके अलावा कोई even prime number नहीं है. Smallest prime number is 2. Yes, superb, everyone, very good. The smallest odd prime number is what? So every prime number except for 2, every prime number more than 2 has to be odd. Yes, every prime number more than 2 is definitely odd. ये तो हम सबको पता ही है क्योंकि वो even नहीं हो सकता. So what is the smallest odd prime? 3. Yes. Now what's the largest one digit prime number? What are the prime numbers? 2, 3, 5, 7, 9. Correct. So 9 is the largest prime number. Am I right? No. Why? 9 is not even prime. Yeah, 9 is divisible by 1, 3 and 9 itself. Yes. तो क्या है? 7. The largest one digit prime number is 7. यहाँ तक तो सबको पता ही होगा, but now let's go start talking about two digit numbers. Smallest two digit number 11. Yes, two digit prime number is also 11. Smallest two digit number is also 11. What is the greatest two digit prime number? Anyone? Greatest two digit prime number. Greatest number is 99, but is it prime or no? Yes. What is the greatest two digit prime number? 99? Nahi. So you can go back like this. 99, no, because it's a multiple of 9, 11, 3, 33, all of it. 98, no, because it's even. So the next thing is what? 97. 97 is the greatest, the largest two digit number. Yes, two digit prime number. Yeah. What's the smallest three digit prime number? These would be very helpful for you when you have to, deal with some questions जहाँ पे directly वही पूछा है, right? Smallest three digit prime number is 101. Yeah, 101 is the smallest prime digit, smallest three digit prime number, and the largest three digit prime number क्या है? Anyone? Anyone? Largest three digit prime number? 997. Again 999 नहीं है, 998 नहीं है, तो 997 है. Yeah. Smallest four digit prime number. अब आप बोलोगे कि सर 1001 is not divisible by, sorry, it's not a prime. Why? Because 1001 is divisible by 11. Yes, तो 1001 नहीं है, 1002 नहीं है, तो क्या हो गया अगला? 1000, 1003, no, 1004, no, 5, no, 1007. Yes, 1007, sorry, 1009, not even 1007. 1009 is the smallest four digit number. Yes. Got it, guys? 1009 is the smallest four digit prime number, and the largest four digit prime number would be what? Largest four digit prime number is 9973. Got it? इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो एक बार फटाफट से देख लो, एक बार पूछ लो.
1003 गलत है गाइस, 1003 गलत है. 1003 is a multiple of 17 also. Yes, 1003 is a multiple of 17 also. So it cannot be a prime. 1007 is also not a prime because it is a multiple of 19. नहीं है. Got it? Sir, 1 even है या odd है? Shiv, 1 is odd. 1 is odd. The number 1 is odd. ठीक है. विशाल 1000 बफरिंग हो रही है? नहीं हो रही है. शुभम बफर नहीं हो रहा. देखो आपके इंटरनेट में कोई इश्यू है क्या? देखो. No, you don't have to remember these. 1007 is 19 का multiple. You don't have to remember these guys. सुदीप, ये याद रखने की जरूरत नहीं है. Yes, you don't have to remember these, but these would be helpful. Yes, ये याद रखने का जरूरत नहीं है, but these would be helpful. Got it? 1007 is divisible by 19, guys. 19 and another prime number that is a part of 1007 is 53. Got it? Spurs 0 even है. सिमरन, you don't have to learn it, you don't have to remember it. ये बस information के लिए मैं दे रहा हूँ. If you can remember it, if at all you can remember it, then that's good. Otherwise, we can sit and figure out. Yes, maybe largest नहीं, but smallest तो figure out कर ही सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. How to identify if a given number is prime or no? Yeah, how should you identify? By looking at a number, how can you identify if it's a prime or not? Yeah, you cannot sit and divide number. मतलब 100 के ऊपर, 100 के ऊपर अगर आप बैठ के करोगे तो it will become a very big issue. Yes. Got it? Abhishek, yeah, in that case, yes, they would be a subset of whole numbers also. Yeah, they are a subset of natural number, but then they will be a subset of whole numbers too. Yes. Cool. Chalo, let's talk about how to identify if a number is prime or no. Yeah, the most common one that we have seen is if a number is divided by 6. If a number is divided by 6, then it would give you a reminder of 1 or 5. तो इससे अच्छा आप क्या याद रख सकते हो? You can write that any prime number p can be written in the form of 6k plus or minus 1, where k is nothing but integer. Yes, k is a positive integer. But यहाँ पे क्या सीन है? That is not true though. Yes, this is not true for all. This is true for all prime numbers. So this is true for all prime numbers, but not all numbers जिसके लिए ये true है, this will be prime. Are you understanding? Not all numbers of the form 6k plus or minus 1 would be prime. So I can write all the prime numbers in this form 6k plus or minus 1, obviously greater than 3. Yes, prime numbers greater than 3 के लिए 2 और 3 को जाने तो उसके बाद से every number can be written. 5 can be written as what? 6 into 1 minus 1. 7 can be written 6 into 1 plus 1. Yes. 31 can be written 6 into 5 plus 1. 29 can be written 6 into 5 minus 1. समझ में आ रहा है? Spurs k is integer, positive integer. Yes, but the exception, अब यहाँ पे exception क्या है? Not all numbers of this form are divisible by. I would follow this format. Which numbers would those be? Let's say if I say k is equal to 4. So 6k, that is 24. 23 is divisible. I love 23 is prime. Correct? 23 is prime, but 25 is not. So not all numbers that are of the form 6k plus or minus 1 are prime, but then all prime numbers definitely are in the form of 6k plus or minus 1. Got it? हाँ, मैं रिपीट कर देता हूं. What I'm saying is
एनी प्राइम नंबर इफ यू डिवाइड बाय 6 उसका रिमाइंडर इधर +1 रहेगा या -1 रहेगा. टेक एनी प्राइम नंबर डिवाइडेड बाय 6 उसका रिमाइंडर इधर +1 रहेगा या -1. व्हाट डू यू मीन बाय अ रिमाइंडर बीइंग माइनस? रिमाइंडर माइनस मतलब रिमाइंडर क्या हो गया, एक्चुअली +5 हो गया. या or in other words you can write all the prime numbers in the form 6k plus or minus 1 where k is a positive integer. All prime numbers can be written in this form but not all numbers that are written in this form are prime. समझ गए अभी? Cool? Any questions here, any confusions here किसी को भी नहीं है? तो this is not a foolproof method. समझ में आ रहा है आपको? This is not a foolproof method. So if a number can be written in the form 6k plus or minus 1 does not mean it is prime. But if a prime number is existing, then it can be written in this form. But a foolproof method would be what? This. So this is not foolproof, but the other one is. All prime squares, if you subtract with 1, they must be divisible by 24. Are you getting this? सुपर राम सिंह, वेरी नाइस राम सिंह, कंग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा स्कोर है. 40 आउट ऑफ 60 इज वेरी गुड. या अभी चालू कर रहे हो, अभी शुरुआत कर रहे हो, आगे आगे बढ़ोगे तब आगे और अपना जो है स्कोर इंप्रूव होगा. गॉट इट? बट ये रहा अपना अगला रूल. द अदर रूल इज डेफिनेटली फूल प्रूफ. यस, दिस इज डेफिनेटली फूल प्रूफ. p square minus 1 is always divisible by 24. Yeah. So if you take any number, square it, subtract it with 1, and if it is divisible by 24, it has to be prime. Yes, this works out for every number. Got it? Works out for every number. P square minus 1 must be divisible by 24. Got it? So this is how you would identify prime numbers. You can take any number and check also. Let's say if you take 13, yes, 13 square minus 1 is what? 169 minus 1, that is 168, है ना? So 168 का क्या है? It has to be divisible by 24. 24 का क्या scene है guys? How do I check if a number is divisible by 24 or no? Take two co-prime numbers, 8 and 3. If the number is divisible by 8 and if the number is divisible by 3, it is divisible by 24. Yeah. So 168 is divisible by 8 21 times and it is divisible by 3. How do you check for 3? How do you check for 3? 8 का तो हो गया last 3 digits, you can directly divide and check. और 3 का क्या हो गया? Digital sum. So 1 plus 6 plus 8 is how much? 15. Divisible by that, that means 13 is a prime number. Are you getting it? Yeah, again here again there is a condition. Yes, condition is what? That the number has to be, that the prime number should be greater than 3. Yes, this has to be greater than 3. वो तो सब जगह है ना? 2 और 3 को तो आप आराम से आइडेंटिफाई कर लोगे. Yes. Got it? First, this applies only for numbers that are greater than 3. So the next prime number after 3 is 5. 5 square minus 1 is 25 minus 1, 24, divisible by 24. Got it? Why is this true? This is true because you can write p square minus 1 as what? P plus 1 into p minus 1. Yeah. That is, बीच में एक प्राइम नंबर है, इसके दो ऑल्टरनेटिव नंबर्स, राइट? +1 -1, एक लेफ्ट में एक राइट में. Yeah. So if I consider this number to be, let's say 3, if I consider the prime number to be 3, चलो 3 नहीं लेते हैं, let's not take 3, let's take 5.
तो 5 का क्या सीन है, इट हैज टू बी डिविजिबल बाय 4, मतलब p प्लस 1 इज 4, p माइनस 1 इज 4, जो भी है गाइस, p प्लस 1 इज 6, p माइनस 1 इज 4, है ना. So if a number has to be multiple of 6 and 4, it is definitely a multiple of 24 also. अगर ये नंबर 6 का भी मल्टीपल है, मतलब if it has to be multiplied by 6, it has to be multiplied by 4, it has to be multiplied by 24 also, है ना. Yes, works always. Got it? So p square minus 1 must always be divisible by. फर्स्ट मैं बस एग्जांपल दे रहा था मैं बस एग्जांपल दे रहा था. 168 169 13 स्क्वायर इज 169, सो ये जस्ट चेक कर रहा था. 13 स्क्वायर माइनस 1 is 169 minus 1 168. 168 is divisible by 8 also, 3 also. वही चेक कर लेते हैं. ठीक है. Now let's try out this first example here. आपके सामने जो है 10 नंबर दिए गए हैं. There are 10 numbers in front of you. Quickly test this. Let me know if you can find out if they are prime or no. Yeah. कैसे चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? If a number is can be written in the form of 6k plus or minus 1, then we cannot be sure of it. But if it cannot be written, if it cannot be written in the form 6k plus or minus 1, it is prime. It is not prime. Yes. And then you will find out what? You will find out the number of factors. बस वही करना है, कुछ दूसरा कोई ऑप्शन नहीं. Or you can do what? Check for p square minus 1. If it is divisible by 24, then yeah. Cool. Try out karo quickly. Let's look at the first one. First number क्या है? 43. Right? First number is 43. We all know that 43 definitely is, yeah. Forty-three is prime, definitely prime. Yes, 43 can be written as 6 into 7 plus 1. Yeah, but the actual reason why it is prime is, इसको अगर इसका square करके आप subtract करोगे, if you do 43 square minus 1, that will be divisible by 24, right? So if you do 43 square, you get 1849. कहाँ है ये? 1849 minus 1 करोगे 1848. It is divisible by 8. 848 is 106, and it is divisible by 3 also. कैसे? 9, 13, 21. So this is prime. Yeah. How about 93? Anyone? 93. So 93 can be written in the form of 6k plus or minus 1. Can we? Yes or no, guys? You can write it as what? 6 into. So 93, 94 can be written as 60 plus 34. Nahi. 92 can be written as 60 plus 32. Nahi. So that basically means what? This cannot be written in the form of 6k plus or minus 1. Correct? That means this is not prime, this is composite. समझ में आ रहा आपको? Yes, guys. Neither 94 is divisible nor 93 is divisible. Not 92 is divisible by 6. Yes. This basically means what? कि ये वाला number नहीं है. This is not a prime, definitely not a prime. Yes. मतलब it is a composite number. Next comes 151. You can write it in the form of 6k plus or minus 1, of course. 9k का वैल्यू 90 हो जाएगा. 90 into 6 is 150. 150 plus 1. तो 151 का स्क्वायर is 22801, और उसका minus 1 करोगे तो क्या हो जाएगा? 22800. This is divisible by 8 क्योंकि 800. This is divisible by 3 also. 2 plus 2 plus 8. Yes. So this is what? Prime. तो green में लिखना है. This is prime. Next 187. Anyone? 187. क्या 187 prime है? नहीं है.
Is 187 a prime number or no? I can write it in the form 6k plus or minus 1, but if I take 187, उसका स्क्वायर है 34369, सॉरी 34969, तो -1 करेंगे 34968, 968. Is it divisible by 8? Yes, it is. But is it divisible by 3? Check करिए. Yes. But 187 is not prime, guys. Okay, यहाँ पे कुछ तो लोचा है. 187 is divisible by 11. 187 is divisible by 11, 17 times. ठीक है, चलो तो उसको we will keep it on side. Yes, but this is not prime. 187 is not prime. This is composite. ठीक है, वो वाला हम बाद में चेक करेंगे. p square minus 1/24 वाला सीन. We will check that out later. But अभी के लिए ऐसे ही देख के बता दो, ऐसे ही देख के बता दो if they are prime or not, guys. Quick. बस ऐसे ही देख के बता दो if they are prime or not. 251, is it prime or no? 251 is prime. Definitely a prime number. Yes, this is definitely prime. 299, prime or no? Yes, 299. 299 is not prime. Yes, this is a composite number. Next number क्या है अपना? The next number is 313. Anyone 313 prime or composite? 313 is prime. 423 है तो फटाफट लिख लेते हैं. 313 is prime. How about 423? 423 is not prime. It's composite. Sum देख लीजिए. 4 plus 2 plus 3 is divisible by 6. This is divisible by 3, not by 6, sorry, by 3, and also divisible by 9. So this is not a prime number. How about 691? Is 691 a prime number? Definitely, yes, a prime number this is. How about 7001? Is 7001 a prime number? Yes, it is a prime number. But इनको अच्छा अभी जब ऐसे हो गया है कि फुल प्रूफ मेथड नहीं मिल रहा है इनको काउंट कैलकुलेट करने के लिए, we'll try and figure something else out, but otherwise this is the scene. ठीक है, got it? Sorry, 7001 is prime. 7001 is prime. Got it? Yes. चलिए, super. Now try this one out. These are just for starters. हाँ दिव्या, वही बोल रहा हूँ दिव्या. p square minus 1 wala is not foolproof. What I thought it would be foolproof, but it isn't. But don't worry, I'll try to rectify that. But ये वाला solve करिए फटाफट से. The average of the first 7 prime numbers, quick. These are just for starters. What? स्पर्श composite number का कुछ calculation नहीं है. Just you can check. If it does not follow 6k plus or minus 1, then it is definitely composite. But if it follows, it need not be a prime. हाँ वही Dolly, that's what I'm saying. It is not.
It is not, however, we will try that out. ठीक है. Superb. The first 7 prime numbers ये तो सबको पता ही है. You can do it in the most standard way possible. 2, 3, 5, 7, 11, 13 and 17. Yeah, you just have to add them. Just add them, you would get our answer. Yes. So ये कितना हो जाएगा? If you add them, you would get 58, and 58 by 7 would be our answer. That is how much? 8 2 by 7. Yeah, that is nothing but 8.2857. That's the scene. Very simple. Quickly try this one out. इसमें थोड़ा सा logic है. There's more logic involved here than just math. Answer this, guys. What is the answer for this question, guys? X has to be between 2 and 20 and it has to be even. तो क्या क्या possible numbers है? Right from 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 and 18. So what we have to find out is which of these can be written in the form of two prime numbers. Sum of two prime numbers और वो भी different. तो इनको कैसे लिखना है? P1 plus P2 के फॉर्म में लिखना है. Prime 1 plus Prime 2 where they are not equal, है ना? So let's see if we can write this. 4 can be written as 2 plus 2, but are they different? No. We can write 4 as 3 plus 1, but 1 is not prime. So this is out. How about 6? Again, 6 can be written as 3 plus 3, but we need distinct, so no. How about 8 though? 8 can be written as 5 plus 3. So this can be counted for. Very nice. How about 10? 3 and 7. Counted. How about 12? Counted. 5 and 7. How about 14? Anyone? 14 का क्या बनेगा? 14, 3 and 11. How about 16? Anyone? 16, 13 and 3. 18. 7 and 11. Yeah. So all these numbers 6 to 18, well, 1, 2, sorry, 8 to 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6 numbers are possible in this way. So this is our answer, 6. Everyone who said option B, 6, बहुत खूब guys, very nice. Yeah. विभोर विभोर लास्ट बेंच में बैठ के खाना खा रहे हो. All right. Quickly guys, quick, try this one out. Try this one out. How many natural numbers below 1000? Below 1000 have exactly 3 factors. Quick. How many prime factors? Sorry, how many prime numbers below 1000 have exactly 3 factors? Quick. ये वाला गलत है. आंसर चॉइसेस इसका गलत है. Don't look at the answer choices, guys.
हाँ शुभांगी, यू कैन राइट इट इन एनी फॉर्म, इट्स नॉट नेसेसरी कि एक ही फॉर्म में होना चाहिए. इफ इट इज डिस्टिंक्ट देन यू कैन राइट इट, डोंट वरी. या इसके ये आंसर चॉइसेस गलत है, जस्ट इग्नोर दीज आंसर चॉइसेस गाइस, बट अदरवाइज क्विकली ट्राई दिस. हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिलो 1000 हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स? शुभांगी, तो मतलब नहीं हो सकता एक से ज्यादा. वी कांट राइट इट इन. व्हाई आर यू स्टिल स्टक विद द सेम क्वेश्चन? आगे बढ़ो. हाँ, so this is out, this is definitely out. Anyone with the answer? So let me tell you a quick concept behind squares of prime numbers. ठीक है, prime squares, prime number का हमें पता है. We know that prime numbers have exactly 2 factors, 1 and themselves, है ना. prime squares का क्या है? prime squares का क्या है? They have to have 3 factors. They have to have 1, they have to have the prime number p, and they have to have the p square also. Are you getting it? So prime squares will definitely have 3 factors. 1, the prime number and the square of it. Got it? So कितने होंगे? These answer choices are wrong. Less than 1000 we are asking. Yes. It is not 11. It is not 11. Check. So what we have to check is how many prime numbers can you fit in between this? Are you getting it? मतलब 1 से 1000 तक, from 1 to 1000, if you take the square root of these, all these numbers का square root अगर आप लोगे तो उनका square root prime number होना चाहिए, right? Square root of all these numbers must be prime. Yeah. So 1 not prime, फिर क्या होगा? 2, 3. So let's directly go for perfect squares. Yes, just directly go for perfect squares. कितने perfect squares होंगे? इसके बाद होगा 4, तो 4 will be counted. Yes. उसके बाद होगा 9, that will be counted. So basically what you do is take prime numbers and then square them. That's it. Take prime numbers and then square them. Got it? Yes, correct. Very nice, Nishant. Very nice. तो अभिषेक 31, not 31. 1 नहीं होगा. 1 is not prime. Yes. So take all the prime numbers, बस square कर दो उन्हें. 2 square 4, 3 square 9, 5 square 25, 7 square 49, ऐसे करके 11 square 121, 13 square 169, 17 square, ऐसे ऐसे करके पूरा करो. Yes, until you get a number that is more than 1000. तो more than 1000 क्या हो जाएगा यहाँ पे? If you take 31 square, that will be the last, क्योंकि उसके बाद just take the next number itself. 32 square 1000 से ऊपर है. Yes, so this would be the last number, would be 31. तो यहाँ से यहाँ कितने prime numbers हैं? Anyone? How many prime numbers are there starting from 2 to 31? Yeah. 11 numbers. So everyone who said 11, very nice. 11 numbers. 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, and 31. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes. So 11 is our answer here. Yeah. ऑलराइट गाइस, ये लास्ट फटाफट से एक चैलेंज लेते हैं और खत्म करते हैं. ये चैलेंज को कौन सॉल्व करेगा? लेट्स सी. हाँ, टाइम तो लगेगा ही. करेक्ट. क्लैशेस करेक्ट. सत्यम, हिमाक्षी, सरस्वती, रिंसी, वेरी नाइस. प्रिंस, दिव्या, अभिषेक, डॉली,
प्रतीक, विभोर, अक्षय, निशांत, सत्यम, बहुत खूब, क्लैशर्स, वेरी नाइस। हाँ नहीं, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। Quickly answer this question. Let's see who can answer this real quick. Simran, no, there are no shortcuts for that. The only thing you can apply is trial and error. That's it. So this it says that itself was a shortcut के less than 3 factors, मतलब it has to be a prime square. वही उसमें shortcut था, वही logic था बस. उसके अलावा there is nothing you can do there. Yeah. Quickly answer this one. Let's see who can answer this first. ये बहुत ही easy question है, बहुत ही easy question है. In a game, 1000 students are placed in a straight line with their position stuck on their back. मतलब पीछे, उनके पीछे जो the chest number होता है वो पीछे लगा हुआ है 1 to 1000. Yes, for each of the students. There are 1000 teachers. Again, उनका position क्या है? आगे लगा हुआ है. मतलब 1, 2, 3, 4 and all that. Each of the teachers have to tag every student if their number can divide the number on the back of the student. Yes. Vani, I don't know if this was your answer to this question or the previous question, but luckily that is right. Both these questions mean the same. क्या बोल रहे? Any student, not any one student, any student who gets tagged less than 4 times. मतलब क्या हो गया? यहाँ पे we are dealing with factors again, right? If the number of factors are less than 4, yeah, they would win this game. But actually 11 would not be right. Actually 11 is one part of the answer. That is the trap here, guys. 11 will have 3 factors. But how about 2 factors? How about 1 factor? इन्हें कौन काउंट करेगा? Guys, 11 जो आप लोग बोल रहे हो बहुत खूब, बट मैं क्या बोल रहा हूं? टैग्ड लेस देन 4 टाइम्स. 4 से लेस होना चाहिए, 3 होना चाहिए, कोई नहीं बोला है. तो सारे जो है बहुत ही ब्यूटीफुली जो है गिरे हैं ट्रैप में. यस. तो यहाँ पे क्या क्या चाहिएगा हमें? यहाँ पे क्या क्या चाहिएगा हमें? वी वुड नीड प्राइम स्क्वायर्स. 3 factors is nothing but prime squares, 2 factors is nothing but prime, and 1 factor क्या है? 1 factor का सिर्फ एक ही नंबर है 1. The only number that has 1 factor is 1. Got it? Yes. Now how many prime numbers? How many prime numbers between 1 to 1000? 251. Correct? 251. This is something that you will have to know. Otherwise this is very difficult. Very difficult. You will have to know this. Yes. Got it? So what is the total? 263. Yes. Any confusions here, guys? है ना? So you'll have to be very careful, guys. Very careful. सिर्फ p square आप लोगों ने consider किया था. You did not consider p. You did not consider 1. Yeah. All right, guys. Thank you very much. This is. हाँ, वो तो याद करना ही पड़ेगा, है ना? है ना? चलिए guys, very nice. 263 was the answer to our question. Nobody could answer it in the beginning. सबने सोचा कि सर क्वेश्चन रिपीट कर रहे, बट नहीं. This is a quick update on tomorrow's marathon that we are having, CAT marathon. Morning 7 o'clock to evening 3 o'clock. 7 से 3 बजे लगातार आपका 7 बजे से पहले उठ जाना, जो भी प्री मॉर्निंग एक्टिविटीज है वो कर लेना. फिर उसके बाद से जो है नाश्ता, खाना, चाय के साथ साथ वहीं पे लैपटॉप के सामने ही करना है. सब विभोर बनने है, सबको क्लास में ही खाना खाना है. समझ गए? सो आई एम होपिंग टू सी ऑल ऑफ यू ऑल देयर टुमारो.
yes, before you start leaving guys, please hit like कर दीजिए, because there was a lot of information in today's session. और कल जो है इसमें आपको बहुत मजा आएगा, कल मैं आप लोगों को मिलूंगा 1 बजे से 3 बजे, उसके बाद दोबारा मिलूंगा, कब मिलूंगा मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा। अगर आप ग्रुप में नहीं हो तो फटाफट से ऐड हो जाओ गाइस, क्विकली गेट एडेड। विशाल जरूर कराएंगे, ज्योमेट्री भी कराएंगे, मॉडर्न मैथ भी कराएंगे, बट पहले मॉडर्न मैथ कवर करेंगे, फिर ज्योमेट्री करेंगे आखिर में, ठीक है। यस, तो ये वाला ग्रुप में ऐड हो जाइए। स्पर्श कौन सा कब से स्टार्ट हो गया था? अक्षय को आज बहुत मजा आया, वेरी नाइस गाइस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बिफोर लिविंग। कैट मैराथन सिर्फ कल है, स्पर्श अगर इसके बाद और अगर होगा तो भी होगा, है ना। टेस्ट भी होगा विभोर, टेस्ट भी होगा, मॉक टेस्ट होगा, मेंटी क्विज होगा, एक छोटा सा कॉफी विथ कैट एजुकेटर्स सेशन भी होगा, बहुत सारे छोटे छोटे सेशंस भी होंगे। कल जो है टुमारो विल बी फिल्ड विथ सेशंस इन दिस चैनल। कल ये चैनल जो है ऑलमोस्ट 20 आवर्स बिजी रहेगा, ऑलमोस्ट 20 आवर्स ये चैनल कल बिजी रहेगा। तो आई एम होपिंग दैट यू विल सी ऑल ऑफ यू ऑल दैट टुमारो। यस Aditya, they will remain for the rest of eternity. No, I'm hoping, no, it won't be deleted. If you are planning on giving it in 2022, so definitely, they will remain. Yes. Different topics, Vani, different topics. Prateek sir will be taking one aspect of QA. I will be taking another aspect of QA, right? Not the same topics. डेफिनेटली इसका क्या मतलब होगा, फिर सेम टॉपिक्स करा के क्या मतलब होगा, है ना, डिफरेंट टॉपिक्स डेफिनेटली। यस साहिल, देयर इज नो सेपरेट कोर्स फॉर IPMAT येट, बट देन इफ यू प्रिपेयर फॉर कैट यू ऑलमोस्ट प्रिपेयर्ड फॉर IPMAT आल्सो, नो। हेलो सिद्धार्थ। अच्छा गाइस, आप लोगों को अगर मेरे से बात करना है, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है 2022 के बारे में, IPMAT के बारे में, मेरे को मैसेज करिए ऑन टेलीग्राम। सुराना लाइव इज माय हैंडल एंड आई विल हेल्प यू आउट देयर, ठीक है। अभी अगर थोड़ा और टाइम ले लिए तो फिर आशीष सर थोड़ा सा डांटेंगे, तो लेट्स नॉट डू दैट। यस, आई विल सी यू गाइस टुमारो। फुल लेंथ मॉक होगा, यस डॉली, फुल लेंथ मॉक होगा। नहीं वानी दोनों के क्लास अटेंड करने, दोनों अलग अलग है, ठीक है। वेलकम स्पर्श, एनी टाइम बड़ी, एनी टाइम। एंड इफ यू आर समवन हु इज प्लानिंग ऑन टेकिंग कैट प्रिपरेशन बहुत ज्यादा सीरियसली, आप अभी चालू कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है कि सर नहीं सर मेरे को नहीं लगता मेरे से हो पाएगा, मेरे को बहुत ज्यादा सेकंड गेसिंग डाउट हो रहा है, तो गाइस प्लीज कंसीडर द अनअकैडमीज प्लस सब्सक्रिप्शन। यस चिराग प्लीज मैसेज मी, कैन यू प्लीज मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट। प्लीज मैसेज मी चिराग, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है, राइट, आई डोंट वांट टू टेक एनी मोर टाइम। तो गाइस दिस इज फॉर प्लस, प्लीज लेट मी नो, प्लीज टॉक टू मी। ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है सुराना लाइव, सो यू कैन फील फ्री एंड टॉक टू मी, ठीक है। आई विल कैच ऑल ऑफ यू ऑल टुमारो एट मॉर्निंग, सुबह 7 बजे से मैं चालू करूंगा। उसके पहले 6:30 को एक छोटा सा मोटिवेशन सेशन भी है सुबह में। So we will give you all these updates on the group. I'm hoping you are on the group. Yes. Aditya, my email ID is also suranalive@gmail.com. So feel free and drop me a text there also. ठीक है, suranalive@gmail.com. Everywhere it is the same only. Yes. Alright guys, thank you very much. Have a great day ahead. कल full prepared होके आना, full battery charge करके आना. In fact 2-3 power banks साथ में रख देना अपने पास. Yes, because tomorrow would be a fun time. Yeah. Alright guys, thank you very much. Good night. Have a great day ahead. आशीष सर के क्लास में जाइए फटाफट, सारे 27 लोग वहां पे जाने चाहिए. Yes. And I will see you tomorrow. Until then, thank you very much. Good night. Have a great day ahead and keep learning. Let's crack it guys. Bye bye.